pleasure to invite a man of intensity, explanatory, Professor Khagendra Kumar, Professor, PG Department of Education, Patna University, Patna, former HOD, PG Department of Education, former Dean Faculty of Education, twice he became the Dean Faculty of Education, former Principal of Patna Training College, Patna University, Patna, former General Secretary of IATE. He has authorized 4 books and published more than 30 papers. And I may offer regards to Sir Khagendra Sir, under whose guidance we 3 of us, means myself, Dr. Upendra Kumar Singh Sir, and Ritesh Sir, who is assistant professor in our college, whose guidance we were taught previously in PG department, Patna University, Patna. Sir, please. Okay. मैं इसको फिर से कहना चाहूंगी आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि खगेंद्र सर, हम प्रोफेसर खगेंद्र सर अब हमारे साथ जुड़े हैं और हम आरएसपी कॉलेज के 3 ऐसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो हम खगेंद्र सर से पढ़ चुके हैं, हम उनके विद्यार्थी रह चुके हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज सर हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ आप भी हमारे गुरु को सुनेंगे। सर प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सर। Thank you. Honorable Chief Patron, Professor Anjani Kumar Srivastava, Vice Chancellor in absentia, Patron Professor Anil Kumar Mahato, Honorable Pro Vice Chancellor of the University, eminent scholar, eminent educationist, Professor Harikesh Singh. Professor Harikesh Singh, we just listened to him, his enlightened talk. He is always enlightened, and he has been my mentor for the last 25 years in Patna while teaching at Patna University. Dean Faculty of Education, Dr. S.K. Sarma, Principal of the College, Dr. J.N. Singh, and Director of Webinar, Dr. Upendra Kumar, Convener, Dr. Subha Ajwani, who happens to be our student, as he told you, and organizing committee as a whole, and all those who have played some role in organizing this webinar. As Professor Harikesh Babu told, that the issue undertaken for this webinar is very pertinent and relevant. And today's theme is online teaching learning process. Excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Sir, please raise your volume, sir. Volume बहुत कम है. Yeah, I'll do. Sir, not able to listen. Today's theme is, now it is okay, is online teaching learning process and assessment during COVID pandemic. During last 2-3 months, I have spoken on similar themes at several webinars, and definitely there would be some repetition of ideas, but I would be trying my best to make presentation simple and focused. Recently, our Finance Minister Nirmala Sitharaman announced top 100 universities can now start online degree courses from June 2020, June this year. And there is no need to take permission if the permission has been granted early. We have more than 2,000 MOOC courses on SWAYAM, and SWAYAM MOOCs platform is world's largest online free e-learning portal for school and university students. Besides, we have a number of online public and private portals for school and university students for preparation of school board and competitive examinations, and providing concepts in science, engineering, technology to college students, and many other diploma and certificates in professional courses. Our open universities are gradually switching over to
to relay media, e-study materials, and online contact classes and virtual classrooms. In case of online education, inputs to be delivered through various portals are prepared by experts. And we know that a small number of experts can prepare lectures or talks, and even they can give input like real life elaborations using animations on the whole syllabus of school and universities. Even it is said that they can manage the pace of learning through using machine learning or artificial intelligence. During this COVID pandemic, our students are out of schools and universities, and the online education is getting wider acceptance, and especially among middle class, because it provides solution to the problem they encounter, the problem of learning. In fact, problem of passing examinations. We must appreciate the role of technology because it has helped us to remain connected and maintain some kind of normalcy during lockdown period, when physical movement was almost curtailed due to this infectious COVID. We know that the online system has allowed many professionals to work from home. There are many professionals working in industries related to computer and online work. They work from home, and similarly, online education with the aid of applications as Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, as we are doing, has become a new normal during this lockdown period. Now, this technology seems to contain the possibility of overcoming social, economic, political, and geographical barriers, and transforming the form of human engagement. The whole process of human engagement is being transformed through this online system of education. It is also said that the nature of online teaching is said to be based on principles of access, equity, and quality. It is also believed that technology has enabling, democratizing, and positive role to play in society. Now, without negating the importance of online education, I would like to address some of the issues which help us to understand why online teaching learning cannot be seen as a replacement or alternative to the existing teaching learning, as it happens in real life situations, real institutions. Digital divide is one very important aspect. I will take that aspect later. Before that, I'd be coming to discuss the isolated nature of online education. And this is more important. You know that online education is an exclusive, isolated activity. It is an isolated activity of few people, a handful of people who are supposed to be very intelligent, superior than the common teachers teaching in our institutions. And a small number of experts can prepare lectures and talks, as I said earlier, for most of the programs that reach students through online. What is missing from online lectures or talks or demonstrations or events is the social dimension. Social dimension of teaching learning absent in online education. And understanding of education as a social practice is also not also not taken over there.
It is isolated from school culture where teacher does not feel the emotion and mood of the students and is unable to interact with them right then. Teacher cannot interact right then. At the moment the students wanted or there is a need of interaction, right then it is not possible. And shift towards digital education appears to have further distanced the teacher from students and its context. It's a very basic issue. The teachers are engaged with questions or answers without any context. All the students in India, they are learning through online system, but the context of those students are not taken into consideration. All are going through the same lecture. And you know, most of the talks and lectures are delivered either in English or Hindi. Most of the digital resources we have prepared in these two languages. And you know, we have number of languages. Every state has its own language. यहाँ तक कि अगर हिंदी में कोई लेक्चर है प्राइमरी या नर्सरी के लिए या प्री प्राइमरी लेवल के लिए, तो हिंदी के अंदर ढेर सारे डायलेक्ट्स हैं, भोजपुरी है, मगही है, इवन कई हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं. तो ये बच्चे किस तरह समझेंगे? इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन either in Hindi and English will not serve the purpose of elementary and preschool education. It will never serve the purpose. And more strangely, most of the talks and lectures on MOOCs are available in English. Even that don't cater to the needs of our students who study or get education in regional languages. मुझे कभी-कभी लगता है ये नैक असेसमेंट की तरह है. जिस तरह नैक प्राइवेट कॉलेज हो, पब्लिक कॉलेज हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, सभी का असेसमेंट एक ही पैरामीटर पर करती है. संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन को वो कंसीडर नहीं करते. तो ये क्या है? मेरे समझ से एब्सर्डिटी है, ये बेहूदगी है कि आप हर इंस्टीट्यूशन को एक ही पैरामीटर पर कैसे नाप और तोल सकते हैं. So it is like you can make a comparison with NAAC assessment. It will help you to understand what I am saying. Now, जिसकी हम बात करते हैं, स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हम कहते हैं कि हमारे एजुकेशन हमारा जो शिफ्ट कर रहा है वो रोट लर्निंग नहीं, टू स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. हमारे बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन पीएचडी लेवल पर नहीं होगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट. तो ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा है, ये जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का इशू है, इट इज ऑलमोस्ट पुअर इन आवर इंस्टीट्यूशंस. आवर स्टूडेंट, वी डोंट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज. ये पहले से ही कमजोर है और ऑनलाइन सिस्टम तो इसको बिल्कुल ही खत्म ही कर देगा. जो कुछ बच्चे सोच पाते हैं, जो कुछ थोड़े बहुत कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा. Now there is a mass closure of schools and universities. It's true. और ये जो क्लोजर है, इस क्लोजर के पीछे भी एक पूरा मार्केट इकोनॉमी चल रहा है. And it has resulted in the technology vendors and promoters positioning themselves as frontline emergency response providers catering to educational emergency, resulting from pandemic market. एक pandemic market खड़ा हो गया है. Big technological companies like Google, Microsoft, Facebook, ये सब जो है ये ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री, ई बिजनेस का, एडू बिजनेस का एक ग्लोबल इंडस्ट्री तैयार हो चुका है. और इवन दे प्रोवाइड कंसल्टेंसीज, दे प्रोवाइड what kind of technology you will use. They are technology providers and as well as providers of the scheme, what kind of education you should provide to our children. Now the institution is not important. Important are these things, these
these companies who will guide the institutions, what kind of education you should provide to your children. So there is a strange situation. Now, the increasing penetration of education sector with centralized digital resources. ये जो हमारा digital resources है, it's almost centralized. It is not that कि every school, every institution is prepare its own e-resources. Even they prepare, that is not taken by the students because better resources are available. वो केवल एक खाना पूर्ति है. तो ये जो चीजें हैं, increasing penetration of the education sector with centralized digital resources and that is delivered through online portals has changed the very concept of education. Education एक ऐसा commodity हो गया है कि अगर आपके पास संसाधन है तो कहीं भी ले सकते हैं. You can take anywhere if you have access to computers, if you have access to sophisticated mobiles, or if you have high-speed internet facilities, you can take education at any place, anywhere. In a way, it appears to be very democratic, but at the same time, behavior is like commodity. जैसे एक सामान है, इसकी जरूरत लगभग एक तरह जिसको आप एक तरह के लोगों को जिसकी इसकी जरूरत है, कोई भी खरीद सकता है. उसी तरह अगर आपके पास संसाधन है तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर आपको सूट करता है, बिकॉज इट इज अवेलेबल, it has a central tendency, it is a centralized form, it is delivered in few languages. If it suits you, you can कहीं भी आप शुरू हो जा सकते हैं. Now I will be making a discussion on other aspect of online education. We know that technology finds its conditions for application in society only. कोई भी टेक्नोलॉजी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है. It needs society to operate. And conditions for accessibility of technology and the conditions for its smooth operation are lopsided. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो conditions हैं, ये lopsided हैं. आप डेटा जानते हैं कि जो conditions हैं, अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट की बात करें, अगर आप अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप की बात करें, आप अगर अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट यू कॉल मोबाइल्स की बात करें, गुड मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स, तो आपको पता चलेगा इट्स वेरी lopsided. And many portals that provide education is paid, although all the public portals are free. So on SWAYAM portal, almost all MOOC courses are free, but there are various portals which provide paid education. If you have capacity to pay, if you have these facilities, and you know these facilities are lopsided. I will quote here one study. That study was undertaken by Neha Ghatak and Jyotsna Jha. Earlier, I also quoted this study. It's very important, especially this study of Bihar. And we know Bihar and Jharkhand is more or less similar society and similar situation. It was conducted on 700 students of class 7th and 8th. और ये पाया गया, और this was telephonic study. Or it was conducted on around 700 students of class 6 and class 7th and 8th of 2 districts near Patna. In the telephonic survey, it was found that 28% girls had no phone and 21% could not be reached as their number was not operational. 38% had smartphones and 60% had other phones. The higher percentage, 36% boys and 28% girls having smartphones. And during survey,
they could reach only 44% of intended girls as against 51% of intended boys. Almost 95% of the cases where families had a smartphone, the device belonged to a male member, and that meant it was not always accessible to children. किसी मेल मेंबर का वो फोन होता था और ये जरूरी नहीं कि वो हर हमेशा बच्चों को मिले. Half of the families having a smartphone, उसमें से आधे समय तक they can't afford internet packages. अगर एक महीने है तो 15 दिन उसमें इंटरनेट पैकेज होते ही नहीं. यहां तक कि फोन कॉल के समय it was very difficult to convince the person receiving the phone call कि हमें लड़कियों से बात करना है. और जो बात कर रहे थे वो उनके टीचर्स थे. Still they did not permit. कई केसेस में, in several cases, fathers, brothers and other male relatives asked if they could take survey instead of girl. तो इस ढंग के और भी इसमें कई फाइंडिंग्स हैं, लेकिन इससे आपको अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि कितना डिवीजन है सोसाइटी में, लॉपसाइडेडनेस. ये गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन जो है, इनको ऑनलाइन एजुकेशन देना कितना डिफिकल्ट है. बेसिक फैसिलिटीज उनके पास नहीं. हाउ यू विल प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू देम? वो तो छोड़िए, यू कम ऑन टीवीज. कई स्टेट गवर्नमेंट टीवीज पर कई प्रोग्राम्स देते हैं, इस वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स. बिहार में भी एक वन आवर डेली प्रोग्राम है थ्रू ए फ्री चैनल, और उस समय उसका टाइमिंग ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स आर लाइकली बिजी कैरिंग आउट डोमेस्टिक कोर्स फ्रॉम 9 to 10 इन द मॉर्निंग. ये 9-10 बजे का टाइम जो है, वो अधिकांश लड़कियां जो घर में हैं वो किसी न किसी डोमेस्टिक वर्क में एंगेज्ड है. नाउ कम टू केरला. द सिचुएशन ऑफ केरल, वी नो दैट केरल इज, जो भी एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं हमारे, उस पर अव्वल है. हमारे देश में सबसे अव्वल है. जो शैक्षिक व्हाट यू कॉल इंडिकेटर्स, जो सूचकांक हैं, उस पर सबसे ऊपर है. लेकिन वहां की स्थिति को देखिए. केरल ने जून में एक स्टार्ट किया है दिस ऑनलाइन क्लासेस. इसका नाम है फर्स्ट बेल, और ये विक्टर्स चैनल पर आता है. But more than 2.5 lakh students do not have access either to television or internet enabled devices. This is the case in Kerala. 2.5 lakh children don't have the facilities to avail online education. So overall situation either in Bihar and Kerala, it is not different for government school children. And in fact, all those who cannot afford private education send their children to government schools. This is the situation either in Kerala or Bihar. I know Kerala well because I have done my PhD work on Kerala and I visited out of 7 districts. So for government school, on many indicators they are better, but still you see here 2.5 lakh students can't what you call go through online education. So we know the data of the country. We have only 36% of our population having internet facilities, and at the same time, that facilities are available only on mobiles. They don't have desktop and what you call and laptops. Less than 6% people in urban area, and less than 2 to 3% people in rural areas having laptop and desktops. One thing is sure, online education is getting wider acceptance among middle class people having some money to invest on education. And that may be, and for them, online education may be serving purpose of their children, as they may not be suffering in terms of preparation for school and other competitive examinations.
अगर किसी स्टूडेंट को आप पूछ लीजिए कि क्या एजुकेशन का पर्पस है, यू आस्क देम व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ज्यादातर लोग कहेंगे टू गेट बेटर जॉब्स और टू बिल्ड देयर करियर्स. It is not the students, the whole society shares this viewpoint. It is like an obsession. Education is for job, education is for career. और आप देख सकते हैं, आप easily देख सकते हैं, the increasing emphasis on professional and vocational courses across the country. किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आफ्टर 90s जितने भी कोर्सेस खुले हैं, all courses are either professional or vocational courses, and that too under self-financing scheme. You have to pay for that, or in private institutions. So education now it is a product of consumption. If you have money, if you can afford, then it is for you. Otherwise, sorry. Now it is seen in terms of cost, profits, like that. हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को किस लिए? परीक्षा लेने के लिए. We teach students to test. Sir, क्यों पढ़ाते हैं? excuse me, sir. Yeah. Sir, Yeah. sorry for interruption, Yeah. sir. Sir, speaker थोड़ा अब अपने सामने रखिए सर, दिक्कत हो रही है सुनने में. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू. मैं परेशान कर रही. हाँ हाँ, ठीक ठीक. किस लिए आप पूछिए उनको? टेस्ट जो है वो टीचर को पूछिए कि आप क्यों ये जो टेस्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं टेस्ट, वो यही कहेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सीखा या नहीं सीखा है, उनका अचीवमेंट. केवल टेस्ट इसी के तरह लिए है. टेस्ट इसके लिए नहीं है कुछ टेस्ट के जरिए जो पूरे सिस्टम को इंप्रूव करें. टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द सिस्टम. टेस्ट इज टू नो द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट ओनली. उस टेस्ट से टीचर के लिए कुछ नहीं निकलता है. टीचर उस टेस्ट के रिजल्ट का उपयोग अपने टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए नहीं करता है. तो विचित्र स्थिति है और इस स्थिति को बदलना ही पड़ेगा. अब यहाँ पर जाहिर है हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए 5-7 मिनट और हम लेंगे. इसलिए हम एक महत्वपूर्ण बात पर आ रहे हैं कि हम लोग we cannot expose our students, our school children, what is happening around us. The social character of education is lost. Education not social. एक लड़का बैठ करके दिन रात किसी कमरे में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स भी उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं. तो what kind of individual the family or institution is preparing? Education is, of course, education is having necessarily a social character. We don't expose students what is happening around us. And corona is we can take benefit from sometimes we say boon in disguise. We can expose our school children to what is happening around them to make them sensitive, empathetic, caring citizens at the end of the school education. अभी देखिए हमारे एजुकेशन का क्या फल है, आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा. हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 1.5 मीटर 2 मीटर एक दूसरे से अलग बैठना है. अरे भाई, दिस इज सिंपली ए फिजिकल डिस्टेंसिंग. हाउ इज सोशल डिस्टेंसिंग? अगर सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा तो क्या होगा? तब तो भयानक स्थिति हो जाएगी. हम किसी की मदद के लिए नहीं जाएंगे, किसी दोस्त की मदद नहीं करेंगे कोरोना काल में, किसी वर्कर्स की मदद नहीं करेंगे. सो व्हाट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग इज बीइंग कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकता है. कोरोना काल में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे को सिंपैथी देते हैं. हमारे डॉक्टर्स और कई लोग जो है उनसे जुड़ करके उनका इलाज करते हैं. तो इट इज ए काइंड ऑफ it is the result of the kind of education we are receiving. We call physical distancing, we have termed physical distancing or social distancing. There is a growing need to connect
socially with each other, especially with the poor, the deprived people. Corona pandemic has potential to destroy society beyond recognition if we are not shown social connection with each other. अगर हमारा सोशल कनेक्शन नहीं होगा तो कोरोना क्या कर देगा? हमारी सोसाइटी को बियॉन्ड रिकॉग्निशन डिस्ट्रॉय कर देगा. Fear of pandemic cannot make us selfish and insulated. With all possible preventive measures, we must try to strengthen our bond of humanity. It is the fundamental of teaching learning that child is understood. बच्चे को समझना बहुत जरूरी है. Or we don't have any kind of awareness campaign कि first we understand the child, then only we can provide education. There is a need to understand each and every child. लेकिन नहीं, हम तो स्कूल को बैटल फील्ड बना रखे, वॉर फील्ड, कि हम तुमको परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर तुम पास कर गए तो विल चेरिश वी हेल्ड, उसकी प्रशंसा करेंगे, फेल कर गए तो उसको अब्यूज करेंगे, उसको पुल डाउन करेंगे. Our institution has created a war-like battlefield. आप जानते हैं हमारे ढेर सारे बच्चे who have failed or achieved lower marks, they make suicide. How long will continue with such an ethically and spiritually impoverished education, which is self-centric and career-type? We should learn some deep lessons from the present crisis and redefine education, provide it as a social character that can prepare a human being with love, empathy, sympathy, kindness, etc. एजुकेशन में असेसमेंट का बहुत वैल्यू है. जैसे ऊपर ही बात कर रहे हैं कि हम तो टेस्ट और असेसमेंट पर ही जीवित हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन. In fact, assessment is a central concern of institution, and the school education lays, school even university education lays emphasis on assessment, often turning the entire process of education into dry, mechanical routine of rote learning. Child thus looks at learning as a passionless activity in order to score well. He or she feels no love for knowledge. So she loses any interest in learning for the happiness inherent in it. Education का जो एक important goal है to get happiness out of it. लेकिन हम तो एग्जाम के प्रेशर में बच्चे को इस तरह झुलसा देते हैं कि they don't find any happiness within the education. Or it is like dry. They becomes every passion become dry. They don't we don't nurture love, empathy, sympathy while educating children. And in case of online education, situation becomes worse. Online education में स्थिति और खराब हो जाती है. ये तो ऑनलाइन एजुकेशन की जो स्थिति है, लेकिन आफ्टर ऑल हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे स्कूल में रिटर्न करें इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक. एक न्यू नॉर्मल बनाएं, हमारे बच्चे हमारे स्कूल जाए, क्योंकि ऑनलाइन कैनॉट बी ए अल्टरनेटिव सिस्टम. इट कैनॉट बी अल्टरनेटिव टू दैट. इट कैन बी सपोर्टिव. वी कैन यूज ऑनलाइन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द मेन स्ट्रीम एजुकेशन. एंड क्या इसके लिए तैयार है हमारे स्कूल्स जहां हमारे बच्चे लौटेंगे? एक दो डेटा मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा. 45% हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल मींस गवर्नमेंट स्कूल. हमारे यहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि सारे प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल कहलाते हैं और पब्लिक स्कूल को बताने के लिए गवर्नमेंट स्कूल वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए. तो हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं, आई मीन गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें 45% स्कूल्स हैं जिसमें हैंड वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है. और
हैंड वॉश फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल वॉश फैसिलिटी, टॉयलेट भी हो, ड्रिंकिंग वाटर भी हो, हाथ धोने की भी फैसिलिटी हो, अगर ये सभी को जोड़ देंगे तो हमारे स्कूल, आधे स्कूल में भी ये सारी फैसिलिटीज नहीं है। अभी भी आज के दिन भी हमारे यहाँ above 53,000 स्कूल्स में जो रेशियो है स्टूडेंट टीचर रेशियो वो 35 है, एंड 8.3% schools, that is around 1.3 lakh schools, more than 50 students sit in one classroom. तो स्थिति बहुत भयावह है। And online education for sure create optimum conditions for social character, cannot create any, never create optimum conditions for social character of learning. It will make situation worse. It cannot be substitute for teacher negotiating students all through the classroom. Teachers negotiate with the students or vice versa, not only through questions and replies. ये नहीं कि ऑनलाइन में भी प्रश्न पूछने की प्रश्न पूछने का यहाँ भी सुविधा है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं, अगर क्लास में कोई बच्चा उछल रहा है, हंगामा कर रहा है, कुछ ऐसा मिस्चीवियस एक्टिविटी भी कर रहा है, उसके अराउंड भी सीखा जा सकता है। वो कहां से आएगा? सब कुछ क्लासरूम में अच्छा होगा जरूरी नहीं है। चाइल्ड कैन क्वारल, देयर मे बी सम मिस्चीवियस, कुछ बच्चे ऐसा कर दे जो अच्छा नहीं हो, जो बुरा हो, बेंच पर उछल जाए, कूद जाए, इसके अराउंड भी सीखा जा सकता है। दिस मेक्स द एजुकेशन लाइवली। ये कहां से आप लाएंगे? बच्चों का उछल कूद, वो बच्चों का आपस में नोक झोंक, बच्चों का एम्पैथी, सिंपैथी। अगर क्लासरूम में, स्कूल में ही एक पूरा एक मिनिएचर सोसाइटी है, वी हैव एम्पल थिंग्स टू लर्न इन द स्कूल इटसेल्फ। अगर क्लासरूम में कुछ नहीं हो तब भी बच्चे उस स्कूल के अंदर दे लर्न मेनी थिंग्स। जो वर्चुअल डिजाइन है हमारा, इसमें आप टीम भी बना सकते हैं, पीयर ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं, कोऑपरेटिव एंड प्रोजेक्ट लर्निंग भी हो सकता है। अगर एडवांस फैसिलिटीज है तो 4-5 आपस में इंटरेक्ट करके वो सारे काम आप कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं जो कि हम क्लासरूम में करते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, वर्चुअल एजुकेशन कैन नेवर बी रियल एंड सोशल। और वर्चुअल एजुकेशन से जो व्यक्ति निकलेगा, that he or she will become helpless when reality comes to the fore. जब सच्चाई सामने आएगी, जब परिस्थिति खड़ी होगी, तो ये वर्चुअल एजुकेशन वाले बच्चे जो हैं वो सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएंगे। Hence is my closing comment. Virtual education can be used as a supplement to the real classroom situation imparted through schools and higher education institutions in different social milieu. The use of virtual education should be permitted to the limit that cannot replace the institutions made of walls and roofs and social conditions in which they operate. Thank you very much. Thank you. You can hear now. It is my hello, given the closing statement. Hello. Now it's over. Hello. Sir, we are not able to listen you, sir. Now it is over. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Able to listen you, sir. Yeah. Yeah. Yes, sir. Audible, sir. Your Now voice is close. audible, sir. Yeah. Sir, may I start? Yeah. Yeah. Thank you, sir. Very brilliantly you put the matter and the current scenario with the relevant data, sir. And I must say that every coin has two sides. One side, every cloud has a silver lining, means we must appreciate the role of technology. And the other side, we should know and aware with all the drawbacks of technology or technology-based education.
as you said right now, sir, that there is no alternative of teacher and chalk talk class or the physical class. Technology is only to assist the teacher. Is it, sir? Is it, sir? Yes, Thank you, yes. sir. Thank Yes. you. Thank you once again from the core of my heart, sir. Okay, thank you.